अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? अच्छा जी फहीम, ये आपकी प्रेसी की इवैल्यूएशन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट डियर, ये आपने प्रेसी की और नो, इट्स ऐसे बेसिकली इट्स इंट्रोडक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Alright, dear. Gender equality, a popular slogan from prophets to the great leaders and individual humans have tried to in our humans are in humans are in continuous की spelling गलत है. There is but there is vast gulf between basically तो दो ही genders है ना, male and female. Elaborate mention. South Asian countries are lagging behind in all regions in similar situations. As far as national front is concerned, this you need to work on the thesis statement. Thesis statement भी काम करना चाहिए. Work on introduction as well. Be sure how you can gender equality is. See the topic again. Gender equality are popular slogan. Is a constant struggle in this regard. At the global level, gender equality has been observed
countries in terms of bridging gender equality. Yeah. They have same pay scale for both gender. As far as religion is concerned, Japan, all are working a same setting without any gap of any gender. Even third gender are in same way as in society. In Pakistan, however, situation is precarious. Civil service, gender, female gender are outclassing the male. But in FATA or other private agencies, the situation has not improved yet. Now comes the thesis statement. Gender equality is a must element for growth of society. The major rational gender inequality is due to feudalistic mindset, right? Thus, gender engineering engineering is required in all sectors of Pakistan. You skip the thesis statement part. You need to work on it. Rest is all fine. So आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल टॉपिक है और उसमें मैं यही वाला मेथड इनवर्स पिरामिड वाला क्यों फॉलो करूं, जबकि उसने पाकिस्तान का नाम लिया है. लाइक टेररिज्म इन पाकिस्तान है तो मैं इंट्रोडक्शन में सेम मेथड क्यों यूज करूं. द आंसर इज हमेशा चीजें कंपेयर एंड कंट्रास्ट से होती हैं. तो इवन इफ आप टेररिज्म बता रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे सारी बुराई पाकिस्तान में या सारी अच्छाई पाकिस्तान में. इट वुड बी द मिक्सचर ऑफ बोथ. सो जो आपका क्वेश्चन था कि हम उसमें टॉपिक पाकिस्तान स्पेसिफिक हो या इंटरनेशनल हो, फिर भी इन आइदर केस आपने क्या करना है. इन आइदर केस आपने
इनवर्स पैरामिड को ही फॉलो करना है। आपने ओपनिंग सेंटेंस करना है, ग्लोबल लेवल की एग्जांपल देनी है, रीजनल लेवल की देनी है, नेशनल लेवल की देनी है, एंड देन आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। आप इंट्रोडक्शन दोबारा लिखें, थोड़ा सा डिविएट हो गया, बाकी इट्स गुड, मैंने अभी आपको लिख के भी दिखा दिया। कोई भी क्वेश्चन हो यू मे ईमेल मी, और आप मुझे वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट मस्ट बी ऑल फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।